Right, so good morning everybody. Welcome to day 20 of the Magic Book session. So before we begin with today's session, if any of you have any questions or any sharings, you can unmute yourself and ask or share. कल की exercise, who all did yesterday's exercise? एक बार हमने सुबह कर ली थी, so उसके बाद भी if any of you did the exercise again, so you can just write it down in the chats कि हाँ आपने वापस से वो exercise करी थी. If not also, then फिर भी how was your day, how was your entire day, आपको पूरे दिन में कैसा feel हुआ, and all of that you can share that as well. Okay, Manya did it again. Okay, Rashna ji also did. Perfect. So how was the experience when you did this exercise again? Would you both like to share? Good morning, ma'am. Good morning, Manya. Ma'am, yesterday when I was going to pluck up the flowers from my garden, it is quite far away from our house. So it comes in my daily routine that I go and pick the flowers for my grandma for her puja. So yesterday I have gone there saying thank you, thank you, thank you in every step, in every footstep, and then by plucking up the flowers and by watering them, and whatever it I've done, I have said thank you, thank you. So Great. I was like, every day I was going and just taking the flowers, but I was not thinking, yeah, the flowers are very beautiful, and I was thinking, yeah, they are good, they are beautiful. But yesterday it seems like another way, the most beautiful, एकदम बहुत प्यारे लग रहे थे, एंड हर रोज हवा चलती थी उतना मुझे नहीं फील हो रहा था, बट कल when the air was blowing, I was just feeling the air and I was so happy. Great, amazing. This is a very beautiful sharing. Thank you so much for sharing it with everyone. Okay, who else? Who else wants to share their experience? So now you can also continue to do this every day since you go and get the flowers every day. So you can now do this every day as well. Yeah, I will do surely. Yes. Okay, perfect. Who else? Who else wants to share their experience related to yesterday's exercise? Yeah, कोई question है तो भी आप पूछ सकते हो. I want to share something. Mhm. बहुत पहले एक कंपटीशन था, समथिंग पोएट्री कंपटीशन इंडियन फिल्म हाउस की तरफ से, वेयर मेनी पोएट्स registered from all over India. So I also registered for that, and मतलब डे बिफोर yesterday एक स्टेटस आया था उनका कि वी आर सिलेक्टिंग 100 पोएट्स फॉर द बुक, जो वो बुक इशू करेंगे. वो एक बुक करने वाले हैं जिनके लिए वो टॉप 100 पोएट्स सिलेक्ट करने वाले हैं अमंग जितने भी पोएट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. सो yesterday I was talking to Nandita and I said let's attract this कि मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊं. एंड सच में मैंने वो जो 1 मिनट या 2 मिनट सोचा था कि आई एम फीलिंग थैंकफुल एंड आई एम डूइंग थिंग्स कि थैंक यू गॉड फॉर दिस, दैट आई एम सिलेक्टेड इन दिस. एंड रात को सच में आई वाज टॉकिंग टू नंदिता एंड पीछे से मैसेज आया था दैट आई एम सिलेक्टेड. आई एम थैंकफुल कि मैंने वो किया और वो सच में आया मेरे पास. I was not expecting that. Congratulations. Yeah, thank you. That was amazing. So Thank sometimes when you visualize, you manifest things almost immediately. Like I remember when I was going to Rishikesh and uske baad I had to go to Delhi to meet my friends. And then one of my friends, मुझे पता चला कि she wouldn't be in Delhi because उसका अचानक से plan बन गया to go with her family also to some vacation. But then my friend was like, hey, no, let's visualize that
you are still meeting her or we are still meeting her. So I visualized, and then next day when I had a talk with her, तो पता चला कि हम दोनों सेम ही जगह पे जा रहे हैं घूमने. So that happened, and I was like, wow, we रात को ही सोच के मैं सो गई and सुबह ये हो गया. So that was amazing. So sometimes visualization, you never know कि आपने आज रात को ही visualize किया है और next day या you know 2-3 hours down the line वो चीज़ सच होता है. You never know. Okay. Anything else that anybody wants to share? Any of their experiences? How was your day yesterday? You guys gave gratitude at least 100 times. So किस किस को feel हुआ था उस exercise के time? How was the feeling जब आपने कल की exercise करी थी? Could you feel the gratitude while you were doing it? या बस लग रहा था कि नहीं बस thank you बोल रहे हैं, but I don't really feel anything. How was everybody's experience? Just write it down in the chats once again. Okay. Mohita felt it, Manya felt it. Who else? और किस किस को कल feel हुआ था? या कम feel हुआ था तो भी also equal कि I felt it but not so much. या बहुत ज़्यादा. Yeah, it was normal. Okay. Any other thing that any of you want to share या किसी के कोई questions है अभी तक? Okay, ठीक है. So it's almost 7:30 now. Who would like to nominate themselves to read the chapter in Hindi? So today's chapter is also very simple. अब जो chapters आएंगे, most of them will sound very simple, but these chapters are very powerful chapters. So today's chapter is called Hriday Ka Jadoo, which is heart magic. Day 20. Now, who would like to nominate? It's a very short chapter also, but very, very powerful and a very important chapter. So, who would like to nominate themselves to read the chapter in Hindi? Can one of you nominate yourselves? Okay, Manya, you can unmute yourself and start. 20वां दिन हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की मूर्ति है। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मिस्यू। अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कृतज्ञता के हर दिन का हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञता होने वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तक तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा देगा, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक स्रोत से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षक तंत्र और स्वास्थ्य में
व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। राइट। सो कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। What does this mean? कि gratitude is the memory of the heart. What do you all think? Just write it down in the chat या आप unmute भी कर सकते हो and you can share whatever you think of this line. कि gratitude is the memory of the heart या कृतज्ञता हृदय की स्मृति है. Hi, am I audible? Yes. Yeah, so if you're grateful for things in life, then you will have good memories out of it, and therefore, so usually when we feel emotions, something about people say कि दिल की बात करते हैं. I mean, like, people don't say about how you feel, how does your mind feel. So दिल की बात सुनो and all of that. So it's like very deep thoughts and all of that. So if you feel, gratitude is also something which has to be cherished at that level, I believe. I'm not sure if Right. that answers the question. Right. So your heart responds to different emotions. And so have you guys ever noticed कि आप suppose let's say आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो विच इज़ क्वाइट एडवेंचरस. आप फर्स्ट टाइम वो एक्टिविटी कर रहे हो, लेट्स से आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हो या आप रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हो या आप स्काई डाइविंग करने जा रहे हो या आप रोलर कोस्टर पे बैठने जा रहे हो. सो व्हेन यू गो देयर एंड यू नो द राइड स्टार्ट्स, तो राइड स्टार्ट होने के पहले से ही योर हार्ट स्टार्ट्स टू बीट वेरी फास्ट. या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो where you are surrounded by people who don't have a very good vibe, तो आपको automatically you start to feel it in your heart that you know something is wrong. Do you guys have those experiences जहाँ पे जब आपको डर लगता है तो आप your heart starts to beat really fast all of a sudden. आप भागे भी नहीं हो, आप दौड़े भी नहीं हो, but your heart all of a sudden it starts to beat really fast. या कहीं से अगर आपको vibes अच्छी नहीं आती तो भी also you just feel it in your heart that something is not right. So same way, your heart also responds to gratitude. It remembers what it feels like to be in a state of gratitude and it responds that way. जब आप gratitude देते हो, if you notice, अगर आपने आज तक notice नहीं किया तो today's exercise will help you notice that your heartbeat becomes really really stable. बहुत ज़्यादा stable, बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है and everything just becomes very easier for the heart. So your heart also remembers कि okay, what does it feel like to be in gratitude, and then it works accordingly. And also what Satvik said कि दिल की बात सुनो या दिल की बात बताओ, all those things, because your heart remembers. It remembers the difference between what could be good for you and what cannot be good for you. कभी कभार हमें समझ नहीं आता है, but our heart instantly knows कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, या यहाँ पे कुछ adventurous होने वाला है which I am not very prepared for. तो उसके वजह से we feel a lot of emotions around the area of our heart या in our heart, whatever you want to call it. So अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा. So till now, अभी तक today is day 20, so 19 days में अब तक तो आप लोग को भी ये आइडिया हो गया होगा कि the aim with all these practice, जितनी भी practices हम करते हैं, उसका main aim होता है is to feel the gratitude as much as you can.
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना होता है ऑन द इनसाइड. Because why on the inside? When you increase the feeling of gratitude on the inside, तो आपके बाहरी वर्ल्ड में भी ग्रैटिट्यूड एंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर बढ़ जाते हैं. तो अभी आप इन जनरल ऑल्सो इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर नो रीजन, तो आपके बाहरी दुनिया में यू विल गेट मोर एंड मोर थिंग्स एंड मोर रीजन्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. You will keep attracting those situations in your outside world, which will help you increase your gratitude even further. लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे. So eventually, अगर आपने अभी तक all these exercises, if you've been practicing all these exercises the way they've been designed and you've really tried to feel the gratitude, तो अब तक मे बी इफ नॉट इन द बिगनिंग, तो अब तक आपको अपने हार्ट में डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड फील होने लगा होगा. अगर होने लगा है सो जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट्स दैट यस यू स्टार्टेड टू फील द ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट. थोड़ा सा भी है तो भी इट्स अ गुड चेंज, इट्स अ गुड स्टार्ट. सो इफ यू हैव हैड दिस एक्सपीरियंस कि अब आपको फील होने लगा है ग्रैटिट्यूड in your heart, then just let me know in the chats. And today's exercise, आज के एक्सरसाइज का मेन एम यही है कि पहले आप लोग को जितना भी टाइम लगता था टू फील द ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट, तो आज की एक्सरसाइज उस टाइम को और ज़्यादा कम कर देगी. तो बेसिकली इट विल इंक्रीज द स्पीड एट विच यू विल फील द ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट. And for you to reach that level where you really feel it very, very deeply. हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं. सो आज की जो एक्सरसाइज है, इट्स बिन डिजाइन्ड इन सच अ वे कि it will powerfully increase the depth at which you feel the gratitude. And how will we be doing that? हम अपना पूरा mind, सब कुछ, everything, we will focus all our mind, all our gratitude around the area of our heart, या on our heart, while we say the magic words thank you. And हम वो फोकस कैसे करेंगे, we just learn that in the next paragraph. So वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है. So scientific research have also shown that जब आप when you focus on your heart and तब जब आप gratitude feel करते हो, so your heart responds to that and the rhythm of your heart turant it becomes more stable, more harmonious, and because of that it results in major health improvements. Because आपका heart is stable, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, it is running, it is beating very smoothly, it is working harmoniously with the rest of your body, and उसको टेंशन नहीं है किसी चीज़ की. So because of that, it also results in major health improvements, and आपका immune system भी better होता है, and आपकी overall health better होती है. And this is ये scientific research से prove हुआ है. It is not something जो लोग बस कह रहे हैं. All of this has been scientifically researched, and फिर ये results आए हैं. So this will definitely work. अगर आपको कहीं पे भी डाउट था कि ये सच में काम करेगा कि नहीं करेगा, so science has also said कि ऐसा होता है. So you have no reason not to believe. So this is how powerful today's exercise is. When you focus gratitude around the area of your heart, जब आप you really feel it in your heart, so not only are you attracting more and more good things in your life,
बट आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, यू आर ऑल्सो इंक्रीजिंग योर हेल्थ. So this is how powerful today's exercise is. Starting में when you do this exercise, it would take you a while to get a hang of this exercise, but after a while जब आपने इसको practice कर लिया हुआ enough number of times, तो almost immediately आप वो gratitude feel करने लगोगे and कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी. The feeling of gratitude will increase manifolds. Okay. इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर. आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा. मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें. जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी. लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे. हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं. आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे. या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय या कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं. Right. So this is how you have to do today's exercise. हम अपना gratitude, how do we focus it and really feel it in our heart? This is how we have to do it. So when you start this exercise, excuse me, you have to focus your mind and attention around the area of your heart. And for that, you have to first begin with closing your eyes. Because when you close your eyes, तो आसपास की कोई चीज़ नहीं दिखती है, so there is no form of distraction. And now you can shift your focus and attention around the area of your heart, either on the inside or on the outside, however you want to do it. So do it with closed eyes, at least when you're starting out. बाद में भी also, बाद में आप खोल के कर सकते हो, अपनी आंखें खोल के कर सकते हो ये एक्सरसाइज. बट जैसे बुक में रेकमेंड किया है कि if you do it with your eyes closed, you just feel the gratitude even more. So whenever you do this exercise also in the future, try and do it with your eyes closed, because तब आप कहीं और नहीं देख रहे होगे. सो आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी नज़र विल बी ऑन योर हार्ट. सो इट जस्ट leaves a better impact, and you just feel gratitude even more when you do it with closed eyes. And to help you feel even more focus around that area, अगर अभी भी focus नहीं हो रहा है या attention नहीं जा रहा है, so the next thing that you can do is कि आप you can keep your right hand around the area of your heart. आप अपना हाथ अपने दिल के पास रख सकते हैं. So now when you keep your hand near your heart या on your heart, तो now you are directing, अब आपका और अच्छे से ध्यान जा रहा है. When you pick something, when you touch something, तो automatically उस जगह पे ध्यान जाता है. When you're typing also, आप कीबोर्ड पे देख रहे होते हो, आपको अब अच्छे से याद होगी ये चीज़ें कि अच्छा ये वर्ड यहाँ है, ये वर्ड यहाँ है. बट अभी भी ऑल्सो व्हेन यू टाइप यू स्टिल लुक एट द कीबोर्ड. भले ही आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो, वो फोकस अपने आप आ जाता है. यू आर लुकिंग एट द कीबोर्ड एंड अब आपके हाथ चल रहे, सो यू आर डायरेक्टिंग ऑल योर एनर्जी इन दैट एरिया ओनली. So when you do this, आप अपना हाथ also keep it near your heart, so that okay, now you know, your mind also knows कि okay, this is where I have to focus. अब आपने उसको डायरेक्शन दे दिया कि this is where you have to focus. So now it just makes it even more easier when you do this exercise.
ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं दिल से आ रहे हैं। और थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज दैट व्हेन यू आर सेइंग द वर्ड्स थैंक यू, अपने हार्ट के एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करते टाइम जब आप यू आर सेइंग द वर्ड्स थैंक यू, तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि ये शब्द आपके दिमाग से नहीं आपके दिल से आ रहे हैं। और थर्ड व्हाट यू कैन फोर्थ, यहाँ पे 3 चीजें बताई, एक आइज क्लोज, सेकंड कीपिंग योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, एंड थर्ड यू कैन इमेजिन कि जब आप थैंक यू बोल रहे हो तो वो वर्ड्स आपके दिमाग से नहीं आपके दिल से आ रहे हैं। फोर्थ, व्हाट माय पर्सनल सजेशन इज कि आप ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके कर लो, कि आंखें भी बंद करो, कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, एंड देन इमेजिन कि जब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो सो ऑल दीज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, देन यू फील इट इवन मोर डीप। जस्ट माय सजेशन। ओके, आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर दें, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा को यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शेष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहरण महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। right, so your first step was to, इस एक्सरसाइजेस के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज टू जस्ट focus around the area of your heart and say the words thank you and really feel it. इसका पार्ट 2 इज द सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सरसाइजेस, कि यू हैव टू टेक, आज आपको यू हैव टू टेक योर टॉप 10 डिजायर्स। तो जो हम लोग ने डे 13 पे व्हेन वी मेड आवर रिवाइज्ड ड्रीम लिस्ट, यू हैव टू टेक दैट लिस्ट। बहुत से लोगों ने मे बी 10 चीजें नहीं लिखी होंगी, अगर आपने 10 से कम भी लिखी तो भी इट्स ऑल राइट इफ एनी ऑफ यू हैव दैट क्वेश्चन। तो आप वो लिस्ट लेनी है, यू हैव टू टेक योर डिजायर लिस्ट एंड देन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज अलॉन्ग विद दैट लिस्ट। तो आपको क्या करना है कि जो भी डिजायर आपने अपने उस लिस्ट में लिखा है, इधर आप उसको अपने मन में पढ़ लो या आउट लाउड पढ़ लो,
एंड जैसे ही आप अपने पहले डिज़ायर के एंड में पहुंचते हो, जब आपने वो डिज़ायर पूरी पढ़ ली, उसके एंड में वंस अगेन क्लोज योर आइज एंड अपना पूरा फोकस आपको अपने हार्ट के एरिया पे लेके जाना है, पूरा फोकस एंड पूरा अटेंशन। एंड देन उसके बाद यू हैव टू से द मैजिक वर्ड्स अगेन, विच इज थैंक यू, एंड से इट वेरी वेरी स्लोली। तो जो भी ड्रीम लिस्ट हमने बनाई थी उसमें इफ वी वर डूइंग इट इन हिंदी, तो हमने स्टार्ट किया था कि इस चीज़ के लिए व्हाट जो भी डिटेल्स थी उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Whereas when we wrote it down in English, तो we were starting with thank you, thank you, thank you. तो उस टाइम तो आपने उसको ऐसे स्टार्ट कर दिया या ऐसे धन्यवाद 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 बोल के आपने एंड कर दिया 3 times. But when you are done reading your desire, first desire, once again, now you have to close your eyes and say the words thank you very very slowly. So if you can, once again, keep your hand on your heart, near the area of your heart, and then say thank you very slowly. तो उसका impact बहुत ज़्यादा आएगा। जो भी ऊपर इन्होंने अलग अलग टिप्स दी है कि आंखें बंद करके हाथ दिल के ऊपर रख के एंड ये इमेजिन करना कि जो आपके वर्ड्स निकल रहे हैं, इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम योर हार्ट इंस्टेड ऑफ योर माइंड. So you can use all the above suggestions while reading your desire list. तो आपने first पढ़ लिया, now you move on to the second. So you read it again, and जैसे आपने उसको पढ़ लिया, once again close your eyes and say and feel the gratitude for that particular dream. कि हाँ वो चीज़ मेरी सच हो गई है, and I'm really really grateful. I am very thankful कि thank you so much for making this happen. And then you move on with the rest of your list. Third पढ़ा, then again end में same चीज़, fourth then again same चीज़. तो हर एक चीज़ के साथ जो भी आपने अपनी डिज़ायर लिस्ट में लिखा है, सबको पढ़ के आपको यही सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है. यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें. सो इफ़ यू वांट टू आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो, सो यू कैन कंटिन्यू टू डू दिस एक्सरसाइज रेगुलरली इफ़ यू वांट टू स्पीड थिंग्स अप फॉर योरसेल्फ. कि मैं चाहती हूँ जो भी मेरे ड्रीम्स है वो थोड़े और जल्दी मेरे लाइफ में आ जाए. सो डू दिस एक्सरसाइज विद योर ड्रीम लिस्ट एवरी डे or regularly. If not every day, then at least do it regularly. कि आज कर लिया, every alternate day you did it. So as many times as you can. जितनी बार करोगे, जितनी रोज करोगे आप, उतना ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. And even if you don't use it with your desire list, up in general also, if you are just doing this exercise, just saying thank you from your heart, तो इसका वैसे भी in your life it will have a very very big impact and very big effect in your life on your happiness, and you will continue to bring more magic in your life. दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन सो आप इसको दिन में अगर आप 2 बार भी करते हो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इफ यू जस्ट डू दिस एक्सरसाइज ट्वाइस एवरी डे, तो इसको करने से आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा. सो इट विल हैव अ बिग इफेक्ट ऑन योर हैप्पीनेस एंड जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा, एंड द मैजिक इन योर लाइफ. दोनों चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेजर असर आएगा एंड अ वेरी गुड इम्पैक्ट, अ वेरी बिग एंड गुड इम्पैक्ट. जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी. सो व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज अ फ्यू टाइम्स, आप देखोगे यू विल फील अ वेरी ड्रामेटिक इंक्रीज, अ वेरी ह्यूज इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ योर फीलिंग. आप बिकॉज जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा यू आर नाउ रियली फोकसिंग योर ग्रैटिट्यूड, एंड जितना ज़्यादा आप फोकस करते हो द डीपर यू फील द ग्रैटिट्यूड.
एंड रिटर्न में आपको अबंडेंस मिलता रहता है एंड इट जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. यू हैव मोर एंड मोर रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर. लाइफ इतनी ज़्यादा मैजिकल लगती है कि वाओ, everything that I want is happening, everything that I need in life is happening. सब कुछ अच्छा चल रहा है, or at least most part of it. If sometimes there is at all a bump in the road, it's all right. You still have that faith कि कोई बात नहीं, ये जो है this will go away and you know how to deal with that situation. Use gratitude in all those situations. We have now done chapters like magical way out of negativity, or how to heal anything it is in life which is still bothering you. So how to move on from that, yeah, how to come out of those situations, we've learned it all. अब now we have to put all of that in our everyday lives. उस दिन हमने बस एक दिन किया था, but रोज के जिंदगी में कैसे करना है, you can use those same exercises only. So और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतना ही अधिक समृद्ध प्राप्त होगा. So the deeper you feel the gratitude, it is all about आप कितना ज़्यादा deeply चीज़ feel कर रहे हो. So the deeper your well of gratitude is, जितना ज़्यादा deep आपका well होगा या जितना ज़्यादा deep आपने गड्ढा खोदा होगा, उतना ही ज़्यादा उस वेल में आप चीज़ें इकट्ठा कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा आपके वेल में पानी आ सकता है, या उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो. बिकॉज जगह इतनी ज़्यादा है, इतना डीप है आपका ग्रैटिट्यूड का घड़ा कि उसमें यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर गुडनेस एंड अबंडेंस इन योर लाइफ. So it is all about how deeply you can feel the gratitude. जितना ज़्यादा डीपली आप फील करोगे, उतना ही ज़्यादा abundance and prosperity you will continue to attract and receive in your life. Initial signs when you do this exercise could be कि आपको ये exercise करते करते you might end up crying. आपको रोना आ सकता है, या you might also get goosebumps, या you might feel ticklish या get this tingling feeling around the area of your heart, या suddenly आपको you could be filled with a wave of rush, wave of joy. all those things आपको ये sudden rush feel हो सकता है, sudden rush of joy आपको feel हो सकता है, anything, different experiences. So कुछ भी हो सकता है when you do this exercise. But what is guaranteed is, no matter how your body responds to it, how your body reacts to it, एक चीज जिसकी exception नहीं है, is that you will definitely feel very very peaceful, and you will feel that peace very deeply. And ऐसी खुशी जो आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं. So this will be, ऐसे इमोशंस आएंगे जो मे बी आपने आज से पहले कभी फील नहीं किए थे when you do this exercise, and you will really feel at peace. That okay, so who remembers the movie? यहाँ पे किस किस ने 3 Idiot movie देखी है? Who all remember that movie? अगर आपने देखी है एंड आपको उसका famous dialogue, which is very simple, all is well, who all remember that dialogue from that movie? Yes. So जब भी वो लोग भी, whenever they used to say all is well या all is well, तो उनका हाथ also used to be near the area of their heart, and वो कहते ही they used to feel better. So they were also using this magic that everything is all right, everything will work out. I trust in whatever the greater energy is, whatever you want to name it. आप यूनिवर्स का नाम देना चाहते हो, आप भगवान का नाम देना चाहते हो, आप एनर्जी बुलाना चाहते हो, जो भी है, there is something जो मेरे से भी ज़्यादा बड़ी है. There is some greater power in the universe. So I trust in him or her or in that energy, जो भी आप बोलना चाहो. So all is well and everything will turn out to be good. You just have to have that faith. Okay, Manya, continue.
जादुई अभ्यास क्रमांक 20। जादू, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे-धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। All right. Thank you so much, Manya, for reading the chapter for us in Hindi. Now, who would like to read the chapter in English? So once we're done with the reading of today's chapter in English, उसके बाद we will just do this exercise here also in this session. बहुत ही short, just 2 to 3 minutes or maybe 5 minutes depending. So we will just do this exercise here in this session as well. So my request to everybody is to please stay till the end of this chapter. Okay, so now who would like to read the chapter in English? Okay, Manya, you can read it in English also. Day 20. Heart Magic. Gratitude is the memory of the heart. Jen, website, Matthew, French Revolution activist. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increases too. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of magic, of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier.
And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it few times, you won't need to close your eyes anymore, but as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quick. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As a part of today's magical practice, take your top 10 desire list sorry, and practice heart magic on each desire. Read, read each desire in your mind or out loud, and when you get the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again. Thank you slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desire, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude of your top desires. You can continue to practice heart magic on your desire regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you, even just for using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic of your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial, the intentional physical signs that you The have initial increased, physical signs. the initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a thrilling feeling around your heart, a feel of or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps, but without expectation, Exception. exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. Magic practice number 20, Heart Magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say magic words thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so thank you so much, Manya, for reading the chapter for us.
in English as well. So, okay, do you visualize while doing this exercise? If you want to, you can, you definitely can. When you are reading your list, your dream list, so you can visualize, and then at the end of all of it, when you close your eyes, if you want to continue visualizing, you can do it, and then say the words thank you and really feel it in your heart. So up for this exercise, my request to everybody is to switch on their videos, and then we can do today's exercise. So can all of you switch on your videos so that we can just do this little exercise here in the session as well. Okay, everybody else also, आप लोग को अपनी videos you have to switch it on. All right. Okay. What about the rest of the people? Everybody else is still shy. One more question. We have to take out our same desire list. No, you have to take the same list, the one that you made on day 30. उसी को लेके करना है. Okay, ठीक है. So everybody now please close your eyes, and उसके पहले just keep your right hand या left hand जो भी आपको comfortable है. I think right hand is much more comfortable. So just keep it around the area of your heart. And now close your eyes. And now whatever I say, just repeat those things after. Firstly, take a few deep breaths. Breathe in. And अगर आपके हाथ पैर folded है, तो अगर आपके legs crossed है, तो आप अपने legs को खोल के बैठो. And just keep an open, relaxed body. So just sit comfortably. And then if your legs are crossed, तो आप उसको uncross कर लो. And then take a deep breath in. And out. Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Now imagine जैसे जैसे you are breathing out, आपके body से सारी tension, all of it is now being released from your legs. So once again, take a deep breath in, and now when you breathe out, all the stress, yeah, tension, yeah, anything that is still there in your body, all of it is being released from your right as well as your left. And now focus your entire mind and attention on your heart, whether on the inside or on the outside. And now repeat after me. Thank you, heart, for always being there for me. No matter what I do, you have always been there. मेरे लिए तुम 24/7 काम करते रहते हो. Even while I am sleeping, you are still there doing your work. Always beating for me.
Thank you, heart, for always keeping me healthy and making sure that each part of my body, each function of my body is working perfectly. Before today, I did not even realize all that you do for me. मुझे अंदाजा भी नहीं था आज के पहले कि तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो. But I am here because you exist. I am nothing without you. I am alive because of you. Maybe I haven't said this to you before, but I really, really love you. I really love you, my heart. And thank you so much for everything. Thank you for telling me what's right and what's not right for me. Every day, my heart is healing. And today, I am going to release all the negative energy from my heart. And breathe in the positivity. Thank you, heart, for making me a strong and loving person. Because of you, I have the ability to love truly and wholeheartedly. And I know that whatever happens in my life, you will always be there for me, always guiding me. And whatever happens will be for my own well being and happiness. So, thank you for being in my good times as well as the bad, and still doing your work every day tirelessly for me. एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं लेते हो तुम, which is amazing. Nobody does that for me. Always continuously working for me, always. I trust in the intuition, in my intuition. And I trust you, my heart, that you will always show me the right. Because I know that you know better than what my mind knows. Sometimes when the mind is confused, जब मैं कभी कभार I am very confused in my life. Even when मेरे mind को भी समझ में नहीं आता है what to do in such a situation. You know what's the best.
and I am ready to receive and give love. And today I let go of all the negative feelings that have been holding me back. And I release you of this burden. I am a forgiving and loving person. I have unconditional love inside me. Love flows freely through me. Thank you so, so much for everything that you've done and are continuing to do for me. Thank you, Art. Thank you so, so much. And I love you so much, so, so much. And I will definitely be incomplete without you. So I am so glad that you are there for me. And मुझे पता है that you will be there for me till the end of time. So thank you for being there for me, for being my best friend, for being in my good times as well as the bad, and always guiding me. Thank you, and I love you so much. And now, when you're done with this, slowly you can open your eyes. Okay, okay. So, how was your experience when you did this exercise? So, when you do this exercise later on, आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है. But if you want to do it this way, you definitely can. Just talk to your heart and thank your heart for working for you 24/7 and a lot of other things. So, how was your experience? You can unmute yourself and share. Okay, kind of emotional. What about the rest of the people? आपको कैसा feel हुआ and how was the entire experience? You can unmute yourself and share, or आप chat screen. It was very calming. Okay, perfect. Bernard has been smiling. How was your experience? It was amazing, and I feel light and calm. Amazing, awesome. I'm sorry, I forgot that my video is on. What? I forgot my video was on. I was Okay, okay. yeah. Feels. You made me so happy. Once I can't hear you properly. Your voice is way too low. uh, Bluetooth is disconnected. Use voice command or Bluetooth button to connect. can you hear me? Yeah. Hello. Yes, now I can hear you. I have some trouble here. I can hear you properly now, though, so you can continue. Okay, anyone else who would want to share their experience कि आपने अभी जब ये exercise की, how was your experience? You can unmute yourself and share. Okay, ठीक है, all right. So, I was sharing hmm, that when I was doing this exercise, before it, I was feeling very low and this I was like sleepy. And when I was reading also, then I was also feeling very sleepy. But after doing this, I am just I'm feeling very active and I'm feeling very good and very nice. And amazing. as I can say, because of I have any positive feeling and I have no negative feeling inside. That's great. That's amazing. Very good.
आपके हार्ट को भी अब बहुत लाइट और काम फील हो रहा होगा. Yes. So your heart is also thanking you right now. Yeah. Perfect. Okay. Anything else that anybody else wants to share? All right. Hello. Yeah. Hello. Am I audible? Yes, you are. Okay, fine. Okay. Just now I heard a sharing by Manya. someone in the group. I just by Mania. Okay, fine. I too seriously experienced the way like I was also having something in my mind and some issues, but yeah, right after doing this, even though I'm not attending this section as good as I was attending last time, and some issues is going on and I will fine. But right now I'm feeling so good. I'm feeling like pumped up. Yeah, I'm feeling good. Awesome. Amazing. Thank you for sharing. Who else? Thank you. Who else And thank you for wants? doing this. You didn't do this last season. I did not. I must have forgotten. Okay, thank you for doing this Yeah. season. I did it in August. Maybe last month I forgot. But okay. What did Okay, you do? fine. So today's practice was heart magic. So Yeah. after we were done with the reading of the chapter, all of us, we just closed our eyes and focused on the area of our heart. And then we were talking to our heart, like, thank you for always being there for me, and having an entire conversation with the heart. So it was 5 minutes approx. Yeah, I think we did that last time as well. I don't remember. I might have not. I don't know. Feels like. But I actually missed the section if we have didn't have session. Okay. But right now I'm feeling so I happy. couldn't join all this while. Been trying 7:20. That's all right. You can watch the video later on. I need to stick to the last part and do this if you want. I will. Okay, perfect. Anything else that anybody wants to share? या किसी के कोई questions है related to this chapter or any of the chapters? So you can also unmute yourself and ask. Right. ठीक है. No other questions, no sharings. ठीक है. Cool. So before we end today's session, once again, if you can switch on your videos, do so, and we take a few seconds to give our gratitude for anything it is that you want. Also give your gratitude to your heart once again if you can. All right, ठीक है. So we've almost completed 3 weeks. Today is day 21, but exercise-wise, it's day 20. So congratulations on completing almost 3 weeks into this world of magic. And yes, I mean, I hope you've all started to see, experience magic in your life. So far, अगर आपके life में कोई भी changes आए, it's been 20 days. So if you can just share it in the group, either through a video, record a video, or just write it down in the group कि आपके life में क्या क्या changes आए, any experiences that also you've started to see for yourself or experience for yourself, just write it down in the group because it'll be great to hear everybody कि okay क्या क्या हो रहा है and all of that. So others can also, जिनको who have still not been doing these exercises daily या seriously, maybe there's some shift in their lives and they decide to do it properly. Yeah, I don't know, just it will help people. That's all I'm saying.
Okay, sure, sure. Yeah. All right. So thank you so much for joining me for today's session, and I will see you all tomorrow. Have a magical day. Thank you. You too. Have a lovely day. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.